हाय गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आर यू एबल टू हियर मी एंड सी मी क्लियरली? ये आखिरी सेशन है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का. वी गोना लुक एट प्राइमरी द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स एंड ईथर्स का भी थोड़ा सा रैप अप कर देंगे. ईथर्स का थोड़ा शॉर्ट है. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? कपल ऑफ नेम रिएक्शंस इज इफ यू आर लुकिंग फॉर फिनॉल्स के रिएक्शंस दैट आर बिफोर दिस, पिछले सेशन में देख लीजिएगा. वील लुक एट कोल बेस रिएक्शन, रीमर टीमन एंड अ कपल ऑफ अदर्स. दैट्स द प्लान फॉर टुडे. ओह ठीक है, एक आखिरी बार एनसीईआरटी देख लेते हैं हम लोग. Hey, in serious, I'm excited too, man. We're finishing up alcohol, phenols, ethers. That's pretty awesome. All right, so let's quickly open up NCERT और देखते हैं कि क्या-क्या बचा है करने के लिए. I mean, मैं आपको already बता चुका हूँ, but hey, what's the harm in just checking this out one more time? All right, electrophilic substitution reaction. Sure, we'll do that towards the end. यहाँ पे क्या था? Oh, wait, hold on. These are okay. This is the last part. Electrophilic substitution reaction is the last part of ethers जो बचा है. And interestingly, this spoiler alert, ये सिर्फ aryl groups देंगे, ठीक है? Electrophilic substitution reaction, obviously. Electrophilic means something that likes electrons. Okay, मतलब positively charged चीज. Okay, yeah, sure. दूसरा चीज ये है, actually just before that, is in the presence of an acid, you'll protonate that whole oxygen, जिसकी वजह से वो बॉन्ड टूट सकता है. कौन सा बॉन्ड? CO बॉन्ड. अब किस तरफ टूटेगा, कैसे टूटेगा, we'll look at all that ईथर के रिएक्शंस में. Before we do the ether business, scrolling back up, I know हम लोग थोड़ा उल्टा जा रहे हैं, ये सब हम लोग कर चुके हैं, already done all of this stuff. कुछ important alcohols हैं, ethanol, methanol, we'll look at that. आप इसको आराम से NCERT पढ़ भी सकते हैं, but we can maybe check it out. And then some preparation of phenols, properties. ये यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन दी है, ठीक है, रीमर टीमन रिएक्शन, but the mechanism is pretty interesting. I can maybe थोड़ा बहुत आप सर्च कर सकता हूँ. बाकी I'll give you the links to it. You can check it out as well. It's on the BYJU'S site. We'll also look at coal-based reaction. This is different from coal-based electrolysis. ठीक है, वो आएगा बाद में. That is in acids. ये coal-based Schmidt या फिर coal-based reaction इसको बोला जाता है. We'll look at this. All right, that's the plan for today. And in fact, ये पहला सवाल आज का that I'm going to start off with is going to be with this. देखो, organic chemistry is interesting because it's like a puzzle, right? जब मैं आपको सिखा रहा हूँ या आप कहीं से पढ़ रहे हैं, then you have an idea कि हाँ, ये तो solve हो सकता है, it's easy. But if you're given a reaction out in the wild and you figure out क्या करना है, then you have to click the right key वहां पे fit करनी, which is what makes it so interesting. खैर, let's do that. एक quick सवाल लेके हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग organic chemistry को tackle करेंगे. And this is one of those awesome examples for a puzzle. The structure of a compound that gives a tri-bromo derivative on treatment with bromine water. मतलब मैं इन चारों में से किसी एक से शुरू करता हूं and what I will get is a tri-bromo product. ये पूछा जा रहा है. और आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर फिनॉल है, which means an OH group, this is ortho-para directing. And same with this guy. ये थोड़ा सा अजीब है, right? Like it's a primary alcohol. I don't know what this is going to do. Is it going to have any effect? Well, we'll see. अगर एक एटम के बगल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया तब वो रिंग एक्टिवेटिंग नहीं है. देखो, नाइट्रोजन है, इट लाइक्स टू पुल इलेक्ट्रॉन, बट आई हैव गॉट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन एटम्स राइट नेक्स्ट टू इट, व्हिच मींस वो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उल्टा ना, तो दैट्स नॉट गोइंग टू एक्टिवेट द रिंग. आई थिंक वो डीएक्टिवेट करेगा. तो दिस इज अ लिटिल वियर्ड, वी विल इग्नोर दिस फॉर नाउ. लेट्स ट्राई एंड लुक एट इन तीन ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट होगा फिट. आपको क्या लगता है? या is anyone over here who wants to help me out with this question? Please let me know. Yeah, the quick and easy way to do this is tri-bromo derivative. अच्छा, तो तीन लगाने हैं. कहां पे लगाएंगे? ऑर्थो एंड पैरा. टू व्हाट? OH. चलो देखते हैं कहां पॉसिबल है ऑर्थो एंड पैरा टू OH. ये पहला वाला ऑप्शन में जस्ट गोइंग इन ऑर्डर लुक्स लाइक ये ऑर्थो नहीं लिखते, सीधे ब्रोमीन लगा देते हैं. ब्रोमीन. या दिस इज पॉसिबल, एटलीस्ट पजल वाइज पॉसिबल है. बाकी में आप देखोगे पॉसिबल ही नहीं है ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट. देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑर्थो ऑक्यूपाइड है, which means I can either put a bromine over here and here. That's it. I'm done. Tribromo है ही नहीं. Yeah, it's not going to form anything else because ortho position is already occupied right over here. इसको देखोगे तो ऑर्थो तो है, but para is already occupied by your good old friend methyl, है ना? Which is why I said it's like a puzzle. The only option where it fits is option A, which is what makes organic chemistry so beautiful. Yeah, cool. Just give me a quick thumbs up if you're able to hear me and see me clearly. I haven't got that feedback yet. It will be nice to know that कुछ गड़बड़ नहीं है from that point of view. Yeah, that's it. So this answer to this question. एक और सवाल करेंगे? एक और सवाल कर लेते हैं. The alcohol that refuses to generate a carbonyl compound refuses on oxidation with acidified KMnO4. Why would an alcohol refuse
टू जनरेट अ कार्बोनिल कंपाउंड। इसका क्या मतलब है? मतलब कि ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर एक बेसिक आइडिया में बोला जाए तो नो ऑक्सीडेशन हैपेंस, प्रैक्टिकली यही तो बोल रहे हैं हम लोग। बिकॉज कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा अगर मैं अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाऊं, कीटोन बनाऊं, दोनों में कार्बोनिल है, एंड एसिड में तो ऑब्वियसली हैज कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल मतलब कि मतलब ऑक्सीडेशन प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। अब किस केस में ऑक्सीडेशन नहीं होगा? व्हाट इज द मेन नीड फॉर मेन क्राइटेरिया फॉर ऑक्सीडेशन? वेल, मेन क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट एक तो हाइड्रोजन एटम लगा होना चाहिए, मतलब टर्शरी कार्बन नहीं होना चाहिए, राइट? अगर एक हाइड्रोजन एटम लगा होगा तो उसको तोड़ सकते हो और डबल बॉन्ड बना सकते हो ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ। दैट इज अ कार्बोनिल थिंग। नाउ इट इज पॉसिबल ओवर हियर एज वेल, बिकॉज देयर इज वन हाइड्रोजन हियर। यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन बैठे हुए हैं, ठीक है। इट्स वेरी मच पॉसिबल। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। वेट, व्हाट अबाउट दिस गाय? अच्छा, इधर पॉसिबल है, इधर पॉसिबल नहीं है। एंड विद दैट हिंट यू सी राइट हियर कि इधर भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर टर्शरी कार्बन्स, है ना। इसीलिए इन दोनों जगह कार्बोनिल कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी चार बॉन्ड बने हुए हैं। विच बॉन्ड ब्रेक्स? ठीक है, एक तो मे बी हाइड्रोजन चला जाएगा, बट विच अदर बॉन्ड कैन पॉसिबली ब्रेक? नॉट विद KMnO4, इट्स नॉट ऑक्सीडाइजिंग एनीथिंग एल्स। हाँ, इसलिए यहां पे नहीं होगा। सो आई थिंक ऑप्शन डी शुड बी द आंसर। अगेन, वन ऑफ दोस ऑसम क्वेश्चंस जहां पे आपको बस आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, कुछ मग करने की जरूरत नहीं है। और यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, हट जाएगा, ठीक है, विद फॉर्मिंग दिस राइट ओवर हियर, राइट। इसका आंसर होगा डी। इफ यू फाइंड दिस टू बी कॉम्प्लिकेटेड और ये लग रहा है कि इसमें कुछ मुश्किल है, जस्ट चेक आउट माय प्रीवियस सेशन, आई एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। और मैंने शॉर्ट में यहां पे भी आपको बता दिया कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। चार बॉन्ड होते हैं कार्बन के, पांच तो हो नहीं सकते हैं, चार में से एक बॉन्ड एटलीस्ट हाइड्रोजन होना चाहिए, वो टूटेगा तभी बनेगा कार्बन। ब्रॉड आइडिया, विच मींस टर्शियरी कार्बन नहीं होगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। ऑल राइट, विद KMnO4 लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। हाँ, थियरी भी करेंगे, थोड़ी सी थियरी बाकी है, एक दो सवाल भी कर लेते हैं प्रीवियस सेशन वाले। सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस गिव व्हाट? कॉपर क्या होता है? यूजुअली वी थिंक कॉपर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, बट हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था भाई कि देखो कॉपर अगर ज्यादा हीट करोगे तो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग मतलब कैसे? टर्शरी वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या बट प्राइमरी सेकेंडरी सिंपल है, या अगर प्राइमरी है तो बन जाएगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी है तो बन जाएगा कीटोन, एंड इनफैक्ट अगर मिथाइल ग्रुप है तो मे बी यू कैन आल्सो गेट अ फॉर्मल्डिहाइड। कैन यू गेट फॉर्मल्डिहाइड और नॉट? प्लीज लेट मी नो। हाँ, थोड़ा देख लो, चेक करो फॉर्मल्डिहाइड बन सकता है कि नहीं। बट देयर इज एन एग्जांपल गिवन ऑफ एल्कीन्स एज वेल, मतलब कि अगर टर्शरी अल्कोहल हो तो दैट गिव्स यू एन एल्कीन, क्विक रिवीजन। बट एनीवे, सेकेंडरी इज गोना गिव यू कीटोन, प्राइमरी इज गोना बी एल्डिहाइड, ओके। टर्शरी अल्कोहल, व्हाट? दैट्स अ न्यू वन, है ना? No, that's not the answer. This is a dummy option. Yeah. So ketones should be the answer right over here. Any doubts in the three questions that I've done so far? एक दो सवाल और maybe we can do, but just quickly let me know if there's anything that you don't follow so far, and I'll help you out with that for sure. Yeah. एक last सवाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. Hold on. One moment. The most suitable reagent इस conversion में क्या होगा? मैं alcohol से जा रहा हूं एल्डिहाइड पे and I'm stopping it there. I'm not taking it all the way to an acid. मतलब I need to use a mild oxidizing agent or I need to use a special oxidizing agent that doesn't push it all the way to the acid. What do you think the answer to this should be? Take a second, take 20-30 seconds. And it's obvious it's not A and B, right? ये दोनों तो बहुत strong oxidizing agent है, which means कि these guys are going to be like, you know what? Yeah, we're going to be taking it all the way to the acid. So ये दोनों तो नहीं है, A और B तो नहीं है. What about CrO3, PCC? C और D में से कौन सा होगा? All right, Joel, thanks. What is CrO3? CrO3 क्या? Well, CrO3 by itself is not helpful, right? Maybe again, check out the last session. It's PCC that works wonderfully for this. Pyridinium chlorochromate, okay? So you take pyridium and that's what kind of slows the whole reaction down. Check that out. It's on my session. All right, let's start आज की theory. कुछ सवाल हमने कर लिए. And if we have time, we'll come back and look at some more questions. Since it's been already around 9-10 minutes, let's look at the theory that we want to talk about, and then we'll see और सवाल करने का time हो तो we'll do that. So we've done 1 and 2, right? ये दोनों हो चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं previous session में. We're going to look at these three right now. So let's start with Kolbe भाई साहब. Kolbe का reaction. What does he say? Well, theory wise, हम लोग phenol लेते हैं, उसको पहले phenol आयन बनाते हैं. Phenol आयन, हाँ देखो, phenol आयन बनाने का क्यों कर रहे हो? Why do a lot of phenol reactions try and create a phenol ion? Because
it activates the ring even more. हाँ देखो, phenol है, oxygen has a couple of electrons, like 2 electron pairs, and the whole benzene ring has a lot of electrons. So some of those electrons from oxygen are in the same plane as those of the benzene ring, so it activates it, right? Resonance possible and all of that. ठीक है. And if I increase that negative charge on that oxygen by making reactive the base phenoxide, that activates it even more. ठीक है. तो first step is that. उसके बाद we make it absorb carbon dioxide. This is a weird thing. Nothing else, just carbon dioxide. इसकी वजह से एसिड बन जाता है. हैं? Yeah, that's interesting. Salicylic acid. Aspirin है ना? You've heard of this. This is why this is important. Okay. So, जैसे मैंने बोला, अंग्रेजी में यही लिखा है. The phenoxide ion is even more susceptible to what? Electrophilic aromatic substitution than phenol itself. क्यों? क्योंकि negative charge की डेंसिटी वहां बढ़ जाती है. And CO2 behaves as an electrophile. ज्यादा थियरी होगी ना. Electrophile मतलब positive. Now, where is the positive charge on carbon? Look, everything is relative. Okay. And you're going to argue with me saying, look, CO2 is a neutral molecule. What are you talking about? Where's the positive charge? We'll look at the mechanism. Don't worry about it. But think about it like this. Compared to oxygen, carbon is electropositive. Yeah, sure. Like electronegativity wise, carbon is less electronegative. So, electrophile. Maybe this is what gets attacked by this guy right here. And that's exactly what happens in fact. So, पहले हम लोग डालते हैं base, making a phenoxide ion. Then we do CO2. And the thing is, anytime you have a negative charge and you want to get OH, you need to do an acid workup, जो अंग्रेजी में बोलते हैं, at the end, which is why these steps are there. So all of these reaction steps, the solvent है या फिर step 1, step 2, ये जरूरी है, ठीक है? Don't mug them, understand क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. So the main thing here, the electrophile is CO2. अब electrophile बार-बार बोल रहे हैं, अभी देख ही लेते हैं क्या होता है, ठीक है? Phenoxide बन गया. Phenoxide कैसे बना? Base डाला ना, सीधे बन गया, okay. Then I am putting it in CO2. What happens over here? यहाँ क्या होता है? Well, ये पूरी चीज काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अगर मैं इसको थोड़ा सा, if I make this run around, I can make this look like this, right? And then this guy can go ahead and attack my CO2. Okay? Perhaps that is the best way to look at it. How did this happen? ये यहाँ पे negative मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These electrons go here, correct? And then this goes and attacks this. ठीक है? This first step is what I've shown to you over here. Yeah, and you're comfortable with this, I'm guessing. ये सब तो 11th standard वाली चीजें ही हैं. Okay. And why does it attack this? Because it has a slightly positive charge. Okay, great. That's it. Rishabh, I have no idea what you're saying. But ठीक है, cool, good for you. All right, ठीक है. But carbon के पास already 4 bond हैं. So अगर वो उस पर अटैक करेगा तो कोई तो bond टूटना पड़ेगा. Now I can break either bond this way or that way. Breaking a bond किस तरफ? इस तरफ या फिर इस तरफ. Yeah. What happens is these pi electrons go on to either one of the two oxygens. मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा negative charge after this happens. Okay, ठीक है, तो let's form that bond. Let's form that. Also, जो hydrogen भाई साहब थे, yeah, all of these have hydrogen, right? That hydrogen sticks around, उसमें कुछ नहीं होता है. तो इस कार्बन के 4 bond होंगे and it will look like this. Okay, this is broadly the reaction mechanism so far. And you right away see कि देखो acid तो बन गया. This is the, well, this is not acid. It is the conjugate base of the acid, right? CO minus conjugate base है. अब क्या करो? HCl डालो and you're done. That's it. But hold on. Wait. अभी तो ये aromatic है नहीं. What's happening here? Well, sure. You know what's going to happen. ये hydrogen भाई साहब, this will break this way, yeah? That these electrons will come back here aromaticity के लिए, ठीक है? And अगर ये हो रहा है तो ये वापस ऊपर चले जाएंगे. Negative यहाँ पे आ जाएगा. And like, hey, this is H plus, so this forms this as well. ठीक है? That's it. So 90% of our job is done. After this, the only thing you've got to do is get to the acid stage. You'll notice कि यहाँ पे हमने tautomerization लिखा है. What is this tautomerization? Well, keto ene all tautomerization. Here is the keto form. This is the ene all form. ये आप 11th में पढ़ चुके हैं, I hope. And the reason why this is very stable and this tautomer is more stable is because यहाँ benzene ring बनी है. Now, इतना डिटेल नहीं है आपके एनसीईआरटी में, बट हे, वी आर हैविंग फन. रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ लेते हैं, ठीक है? एंड समझिए कि क्यों हो रहा है. अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, राइट, देन दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. इफ यू आर नॉट स्टडीइंग फॉर दैट, देन मे बी ऑल यू नीड टू नो इज CO2 इज एन इलेक्ट्रोफाइल ओवर हियर. अब कैसे इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि
इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, मतलब सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव। दैट्स ऑल यू नीड नो फॉर जेईई मेन एंड नीट। फॉर जेईई एडवांस यू नीड टू नो दीस डिटेल्स, एंड ये डिटेल भी भारी थोड़ी ना है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। इट्स लाइक मैथ, यू हैव अ कपल ऑफ स्टेप्स। खैर, एरोमेटिसिटी के लिए ये होता है, एंड दिस इज कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म। ओके, ऑलराइट, स्वीट। लास्ट स्टेप, एसिड वर्कअप हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ना, we add that because we want to get to this. See, यहाँ पे ये है, we want to get from this to this, and इसलिए हम लोग एसिड ऐड करते हैं। tada, that's it, खत्म, that's it, that's Kolbe's reaction या फिर Kolbe-Schmidt process, either way is the same thing. And I have given you this, अगर आप चाहते हैं, if you want just the reaction mechanism, आप या इसको आप और पढ़ना चाहते हैं, just look it up on BYJU'S, तो साइट पे देखिए, here it is, a link to the same reaction, right? जो रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने दिया है। एंड लेट मी बी फ्रैंक विथ यू, राइट, हो सकता है दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, हो सकता है कुछ जगह पे इंटरमीडिएट स्टेप्स कुछ और हो, नॉट इन दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ रिएक्शन है। देखो, बिकॉज द डील इज रिएक्शन मैकेनिज्म इज अ वे फॉर अस टू काइंड ऑफ गेस कि ठीक है ये क्यों हो रहा है रिएक्शन इस तरीके में, राइट? सो वी ट्राई एंड से कि या दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, एंड समटाइम्स लॉजिक एक से ज्यादा हो सकता है, बट ब्रॉडली the general idea is कि there is an acid and there is a base reaction happening. Acid reaction, acid मतलब कि there are electrons, किसी चीज को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको एसिड बोल दें, किसी चीज कोई चीज इलेक्ट्रॉन देना चाहता है उसको बेस बोल देते हैं। That's it. That's all organic chemistry all about. ठीक है? That's it. All right. Let's move on to the next idea, which is the Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann. अब ये नेम रिएक्शन आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज जेईई मेन बहुत ही अजीब चीज कर रहा है, ठीक है? लिटरली नाम लिख रहा है और बोल रहा है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, इट्स डन दैट, और इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट कौन सा है, गिव यू सम रैंडम, मैच द कॉलम, सो अनलेस यू नो द रिएक्शन इनसाइड आउट इट्स गोना बी डिफिकल्ट। सो इवन इफ यू डोंट नो द होल मैकेनिज्म, थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए, इवन फॉर जेईई मेन एंड नीट, व्हिच इज मैं इतनी डिटेल में जा रहा हूं। Riemann-Tiemann reaction is fascinating क्योंकि this gives you a major product which is ortho. Usually you would expect कि ठीक है रिंग एक्टिवेट कर रहा है, कुछ मैंने डाल दिया, we'll look at all these things, but ये क्या हो रहा है? How is it that you got an ortho product that's major, not this as a minor product? I mean, yeah, that's interesting, isn't it? ठीक है, the reason behind that is ये process, ये चीज है क्या? What is this? I am putting chloroform, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, एंड NaOH आई बेस में डाल रहे क्लोरोफॉर्म। अच्छा, तो क्या क्लोरोफॉर्म यहां पे सॉल्वेंट है? भाई NaOH सॉल्वेंट है। well, देखो, this is what is attacking it and you don't see right away, right? Because what is happening here, the number of carbons is increasing, right? वो कार्बन आया कहां से? इन माय, सोचो थोड़ा सा, ये पूरा जो मैंने यहां पे लिखा है कार्बन सिर्फ क्लोरोफॉर्म से ही आ रहा है, so which means कि this ring must attack that chloroform or this must attack, either way कुछ तो होना चाहिए। Usually electrophilic reaction ही होंगे, which means कि this has that partial negative thing, so it will probably attack this carbon. Guess कर सकते हो आप, but क्यों कैसे, we will look at that. Cool? This is very fascinating. मुझे तो काफी मजा आता है ये पार्ट करने में, and there is a reason why this is a major product. This is what we'll look at. So CHCl3 इलेक्ट्रोफाइल हम लोग को बनाना है। What is electrophile? देखते हैं। And next, जस्ट लाइक कोल्बेज रिएक्शन, फिनॉक्साइड आयन अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। वहां लास्ट टाइम हम लोग फिनॉक्साइड आयन में से वो जो ऑर्थो वाला पोजीशन था, दैट अटैक द CO2 वाली चीज। ठीक है, कूल, ओके, ग्रेट, स्वीट। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यहां बनेगा? लेट्स सी। CHCl3 के साथ अगर मैं NaOH करूं, व्हाट डज NaOH डू? इट्स अ बेस। बेस क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन। बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है? बेस मतलब एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन है जो देना चाहता है। ये सब डेफिनेशन जरूरी है, मुझे याद हो गया आपको पढ़ाते बातें, ठीक है? एंड आई हैवंट बीन टीचिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉन्ग। सो ये एब्स्ट्रैक्ट करता है प्रोटॉन को, अंग्रेजी में हिंदी में बोलो तो हाइड्रोजन को हटाता है। ओके, सो इट रिमूव्स दिस हाइड्रोजन एंड हेंस यू गेट CCl3 minus, and this is not a stable compound at all because this is what it is, okay? And look at this, you got a carbon with a negative charge and chlorine, like, what are you talking about? I'm a lot more electronegative than you are ever going to be. So give me the electrons, and that is what happens right over here. So ये जब चला जाता है, what you're left with is this and a couple of electrons, because कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बन गए, 2 बचे हुए हैं, and this, like, oh wow, that's fascinating, and this is weird, right? Usually अगर किसी के पास लोन पेयर होता है, we call it a nucleophile, लोन पेयर देना चाहता है, हम लोग इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं। क्यों यार? देखो ध्यान से, कार्बन only has 6 electrons, like 6, it's not octet, right?
So this octet D क्यों आ गया? This is an electron deficient species. ठीक है? Since ये electron deficient है, इससे हम लोग इसको electrophile बता सकते हैं. This is like a special thing, and again, this is one of those details that you don't need to know, but you need to know कि CCl2, this carbene इसको बोलते हैं. This carbene is quite a reactive species, not a stable species at all, because it wants electrons, only has 6 electrons. ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है, वो तुरंत रिएक्ट हो जाता है, तो ये थियोरेटिकली न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, बट यहां नहीं होगा ना, नॉट हियर. क्लियरली दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर इट टू बी न्यूक्लियोफाइल, ऑल्दो इट हैज कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, कूल. नेक्स्ट स्टेप. अब अपने दिस इज 90% ऑफ आवर जॉब. रेस्ट ऑफ इट इज वेरी फिगर आउट एबल, सो टू स्पीक. फिनॉक्साइड आयन बना लिया कैसे, NaOH डाल के बेस डाला था, ये एब्स्ट्रैक्ट यहां पे प्रोटॉन कर लेगा. स्वीट. व्हाट डू वी डू हियर? The usual stuff. This goes here, this goes here, you get a negative thing, and then these guys attack this guy here. Attack मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, और इसका एक जो हाइड्रोजन लगा है वो लगा ही रहेगा, हाइड्रोजन कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है. This is what gets formed. You'll notice that I've put a negative charge over here. Why did I do that? इसका क्या सीन है? Okay, cool. So after all this happens, there was a negative charge over here, right? A couple of electrons. Since मैं इलेक्ट्रॉन इसको और दे रहा हूं, तो कार्बन gets that negative charge because it only has 3 bonds. If it's satisfied with 3 bonds, matlab there's a negative charge. But that's not going to be stable. That's not going to work out at all. So, again, because do cheezein, right? There's a negative charge of carbon. I already told you that's not very stable. And also, if theoretically this were to happen, कि इसके electron चले जाए यहाँ पे, इसके electron चले जाए यहाँ पे, then you again regain aromaticity, which is awesome. Okay. So there's a negative formal charge on this, which is not that stable. And once all this happens, ये बेचारा H is going to be plus, and this is going to get attacked here, and we've got CHCl2 again. You're like, wow, really? इतना effort लगाया to get back to this? Yeah, hold on, we are not there yet. क्या बनाना था हमको? aldehyde बनाना था. यहाँ से aldehyde बनेगा? Yeah. This is fascinating. Okay, base है, okay, and this CHCl2 is great, but Cl2 can break away. We saw that already. या C और Cl के साथ Cl माइनस काफी स्टेबल है, लाइक अ वेरी वेरी स्टेबल स्पीशीज. सो अगर उसको चांस मिला बनाने का तो भाई साहब बना लेंगे. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर, ओके, इज यू गॉट, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सपैंड दिस बॉन्ड राइट ओवर हियर. या यू गॉट एन H, let's not worry about that too much. You got Cl, and sure you got the ring and all of that. ठीक है, not worry about the ring. चलो रिंग ड्रॉ कर लेते हैं. Why be lazy? Let's draw the ring. Ring. Okay, cool. And this is my O minus. And you've got here, you've got this here, and you've got this. Okay. So, अब हमारे पास OH minus भाई साहब हैं in the mix. What this is going to do, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, but it would rather just attack this carbon. क्यों? क्योंकि ये भाई साहब बॉन्ड टूटना चाहते हैं. So, in a usual case, you would say कि OH minus will abstract a proton. But यहाँ पे C और Cl के बीच में that bond's going to break. Because Cl minus that's going to form is pretty strong. Okay, pretty weak base. Like it's pretty stable. ठीक है. All right. So what you get now is O minus over here, and this is going to get a little bit weird. एक हट गया, एक बन गया. Huh. Okay. So that's gone. But is that it? Can we do more things with this? Sure. There's a ring over here. Don't worry about that. Same process repeats, and this is replaced with another OH atom, OH substitute. This is not very stable either, right? Though OH group, when they're next to each other, they'd rather just leave. And what you get, and मैं shortcut में बता रहा हूँ, right? Again, hi, good evening, Gulam, how you doing? अगर आपको डिटेल में देखना है, I'll give you more. You can do this in more steps. Yeah, you can just expand these steps. आप कार्बन और इसके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बना सकते हो, and then you can keep doing that again and again. I'm showing you these steps in short. ठीक है, we have got to this step जहां पे 2 OH बगल में है to each other, which is not stable, so they just leave away as water, and that's good. And then this double bond gets formed, and that's it. You're done. But are you? Well, kind of. You still have to at the end do this acid workup. भूलिए मत इसको. The last step ये है. Yeah, that was fascinating. We took some time to talk about that. मैं थोड़ा डिटेल में इसमें गया.
You don't, again, for JEE मैंने need, you don't need this much detail, but मैं इसमें जा रहा हूँ detail में because just let पूरे reaction, पूरे chapter में 2 ही हैं named reactions that are थोड़ा सा effort, so let's make that effort. It's okay, 10 मिनट ही लगा, क्या हुआ इसमें करने में. So that was it. That was the Riemann reaction. Okay. To recap everything, yeah, I had a phenoxide ion and electrophile बना बनाया नहीं आया था. पिछले वाले में, which was Kolbe's reaction, right? Process, collaboration process. वहां पे electrophile CO2 खुद ही था. यहाँ पे electrophile क्या था? NaOH CCl3 CHCl3 साथ बन के CCl3 minus बना. The negative charge was bad, so Cl minus CCl took those electrons and became Cl minus. So you have CCl2, which is a carbene. This is a reaction intermediate. ठीक है? And then this is your electrophile because these guys attack this and negative charge not very stable on this. So instead, these electrons go here, aromaticity. This goes here. And this is attacked by this. So you get this species right over here. इसके बाद both of these Cl are replaced by a couple of OH and then water leaves and you are left with this. But last step, you have to do acid workup ताकि इसमें OH, well, technically arrow का direction जरूरी है, it come from the negative side to the positive, right? So इसलिए this happens in the end. Ta-da! That was it. And I've given you, if you want to do this in even more detail, मैंने आपको BYJU'S site के links दे दिए हैं, chat में है, check those out. You can just look it up. You don't need those links. Just Kolbe reaction mechanism, Riemann reaction mechanism, you'll get it on the BYJU'S site as well. All right, that was fun. मजा आया मुझे करने में. Last bit है phenol with zinc dust. Zinc is a great reducing agent. So much so कि भाई साहब सीधा इसको बेंजीन बना देते हैं. Really? Yeah, it takes phenol and makes it benzene. Well, why is it a reducing agent? Because if zinc becomes Zn2 plus, let me just get a sip of water and tell you. What is zinc electronic configuration? What is इसका electronic configuration? Yeah, you erase this. Let me use a different color. Be a little lazy here. Zn2 plus, matlab 3d10. That's pretty stable. So it likes doing that, which is why it's a great reducing agent. It likes getting oxidized, so it must be a good reducing agent. Ta-da-da! What does alcohol get reduced to? It's the smallest form, right? Aldehyde से कम alcohol. Get rid of the alcohol itself. OH को ही पूरा हटा दो. Reduction. Okay. There you go. Ta-da! Yeah. All right. Sweet. Quick question. इनमें से कौन से सवाल, कौन से पॉइंट सही हैं, कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Riemann reaction, dichlorocarbene intermediate is produced. Riemann reaction is an example of an electrophilic substitution reaction. Highly reactive ring like aniline, and highly deactivated ring like nitrobenzene, cyanobenzene do not give Friedel-Crafts reaction. These, all of these. यहाँ क्या करें? पहला बार तो अभी समझाया आपको. Dichlorocarbene is just a fancy way of saying this यार. This one is correct. बाकी क्या होता है आप लोग? Can you try it out? Can you? Does that mean answer is A, or does it also mean the B or C be correct or your answer is D? What do you think? Let me know in the chat. Take about 10-15 seconds. I don't think you have to take too much time on this one, but try karo. Let me know what you think on this one. Please try. So yeah, organic is very chill if you do it like a puzzle. राइट आराम से धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने में, बट थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ता है, एज यू कैन सी, राइट, टू नो रिएक्शन मैकेनिज्म, स्पेशली ऑफ सम रिएक्शंस, राइट. मे बी पूरे 11th 12th सिलेबस में मे बी 10-12 रिएक्शन मैकेनिज्म्स यू नीड टू नो प्रॉपर्ली, एंड बाकी जेनेरिक रिएक्शन मैकेनिज्म यू नो ऑफ एवरीथिंग, राइट. अल्कोहल के साथ अगर एसिड डालो तो इट विल बिहेव लाइक अ बेस. अच्छा कैसे? ओके, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन चले जाएंगे, मतलब OH2+ बन जाएगा, एटसेट्रा. ग्रेट. Now, if you make alcohol react with base, will react like acid. कैसे O- Na बन जाएगा? So that's it. This pretty much defines almost all the reactions of alcohol. But when you come to phenols, you have the benzene ring business. इसलिए electrophilic substitution reaction भी हो रहा है. हाँ, ये वाला भी सही हो गया. मतलब दोनों सही हो गया. हाँ. Looks like C also will be correct. How? What is C about? The thing is, what is the whole the Friedel-Crafts reaction? You have AlCl3, which is catalyst. This guy is going to form a salt. Yeah, this is just going to form this. And instead of reacting with your chlorine or something else, instead of reacting with क्या बोलते हैं RCl or RCOCl,
it's going to react with this, and that's not going to be good. And yeah, deactivated ringtone नहीं देता है fatal crash. We know this already. Aniline is the exception also. हम लोग amines में करेंगे इसको detail में, but this is not from the chapters we have done so far, but I think you can pretty much guess यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? Which means this is right as well. Answer is D. Joel, what's happening? Let's move on. Let's shift gears a little bit. Yeah, अब थोड़ा chill करते हैं. We've done like the hard parts. Now just do a little bit of theory. Come commercially important alcohols, methanol and ethanol. Why is methanol important? Well, it's used as a solvent in a lot of reactions. And SN1 reaction में solvent होता है और also nucleophile, right? Hey, Swamiti, what's happening? Yeah. Anyway, so if you're trying to form things in a weak basic medium, you can just use a solvent directly. If you want to use a strong base, maybe add NaOH to this and you get that. SN1, SN2 reactions, etc. हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है? And ethanol, what's the deal with ethanol? Ethanol is industrially important. It's used in fuels, yeah, and yeah, to make a lot of other organic compounds as well. So, पहले बाबा आदम के ज़माने में methanol was produced like this. You literally take wood and burn it in the absence of air. I am not making this up, yeah. देखो, if you take wood and burn it in air, you get CO2 and water. That's not useful. So we will burn wood. Destructive distillation of wood is the fancy way of saying we'll burn it, but उसको हवा नहीं देंगे. We will not give it enough oxygen. We will like close it up. Okay. इसीलिए और इससे इसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो लिक्विड बनता है, उसको हम लोग डिस्टिल करते हैं. इसलिए इट इज कॉल्ड वुड अल्कोहल बिकॉज लकड़ी से बना था. सो यू टेक सॉडस्ट. सॉडस्ट लकड़ी को बहुत फाइन कर दो. सॉडस्ट हो गया. इसमें बॉयल करो. You heat it to about 450 to 550 degrees Celsius. Yeah. And you get some mixture of gases. What gases could you possibly get? Well, you can guess already. हाँ, CO बनेगा because कम ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं. CO2 भी बनेगा. ठीक है, cool. And interestingly, CH4 भी बन जाएगा. Hi. Yeah, okay. I can kind of guess that. ठीक है, इससे ये possible है कि ये सब चीजें बच जाए. ठीक है. All right. Cool. This is what we get. Okay. Interesting. ठीक है. There is some water vapor that's always there in air. ठीक है. And also there is some oxygen that's there. तो थोड़ा सा oxygen, थोड़ा सा water vapor के साथ some reaction happen that will give you this. And you get some liquids. ये gases आपको मिली. कुछ liquid मिलता है. And you get some solids. Interesting. So you keep heating it. Okay. So sawdust बन जाता है charcoal. This is your solid. Okay, and then there's some liquids over here. The liquid part is what is interesting to you. ठीक है. यहाँ पे ऊपर क्या जा रहा है? You keep boiling it. Liquid जो है वो भी boil कर जाएगा. And it's going to go up here and then condense over here. I have this open तो जो भी गैस निकालनी है निकल जाएगी. And what is important to me is this right here, right over here. इसके बाद हम लोग उसको डिस्टिल करते हैं. डिस्टिल का क्या मतलब होता है? We just boil. Just that. So जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस है वो पहले ऊपर निकल जाता है. जो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है नीचे कंडेंस होता है. कूल. कपल ऑफ थिंग्स यहाँ पे लिखी हैं, ये सब बनती हैं. व्हाट्स अप सौम्यदीप, हाउ यू डूइंग? बट आजकल ये सब नहीं किया जाता है. व्हाई डू यू टीच मी ऑल दिस? प्रॉब्ली इन एनसीईआरटी. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस फॉर यू. होल्ड ऑन, लेट्स ओपन दैट अप. Really hope it's an NCERT after doing all of that. Yeah, I don't have fun doing random theory. But here you go. Methanol, also known as wood spirit, was produced by destructive distillation of wood. अब एक लाइन लोगों ने लिख दी है, ठीक है, इसलिए हमने वो सब we spent the last 2 minutes doing that. And आजकल हम लोग ज्यादातर बनाते हैं इस प्रोसेस से. So you need to know these conditions because again random fill in the blanks कहीं ना कुछ आ गया. And these are extra things. Okay, by extra things I mean maybe to get those, you know, say maybe you're able to get 15 out of 25 questions in JEE. Maybe you're able to get 30-35 out of 45 questions in NEET. So to push your marks over that, you need to know random theory like this. अगर ये गलती से आ गया, तो you need to know it. I'm being very frank with you. ठीक है? With logic and all of that, we get a lot of the marks, like 70-80% marks you get with logic, but you need to mug a little bit. And this is the mugging parts are right here. Catalytic hydrogenation of CO, carbon monoxide, H2 डालो, and you put ZNO and CrO2O3, reaction conditioning RGB. Obviously, drinking it is bad. It's toxic. It literally kills you. Yeah, थोड़ा सा करोगे तो it can blind you, it can kill you, it can do some scary things. Yeah, I'm going to skip the slides that are showing you the toxicity of methanol. Uses,
is used to make formaldehyde, which is a great thing to preserve organic matter. Yeah, if you have any cadavers or something like that sort, or even specimens, so formaldehyde is good to store them. And it's used as solvent, paints, and other things. Formaldehyde is HCHO. This is the formula for it. Same difference. All right, let's move on to ethanol. Why is ethanol awesome? Well, it's produced by fermentation of sugars. It's used, as I said, आजकल काफी हम लोग जो है जो fuel बनाने, which is petrol, we mix a little bit of ethanol in it to make it a green fuel. I don't know if it's a smart thing to do, because you're literally taking sugar, which is something you need, and then you're making something completely luxurious out of it, which is random. It's an NCERT, so we'll go over it. Synthesis of ethanol in the form of wine fermentation से होता था. Okay, and yeah, because it is made out of literally food grain, the massive waste of food grain is to make alcohol out of it. But yeah, industry, I guess, capitalism. So you take glucose or fructose, okay? Usse, what happens here? Yeah, you put zymase, which is your enzyme over there, and a lot of oxygen, and you get ethanol and carbon dioxide. This is the process to make this. Yeah, and fermentation, मतलब you basically सड़ाना. ठीक है, अगर हिंदी में बोलूं तो किसी चीज को सड़ने दो अपने आप. वो जो तुमको स्मेल आती है ना अजीब सी, अगर तुम कोई भी खाना बाहर रख दो और यू फॉरगेट अबाउट इट और इट्स पास्ट एक्सपायरी डेट, दैट्स फर्मेंटेशन. यू बी लाइक ब्रो, डोसा बनाने में तो फर्मेंट होता है. या बट यू डोंट लेट इट गो ऑल द वे टू सड़ना. फर्मेंटेशन अ लिटिल बिट खाने में tried and tested things doesn't kill you, but if you eat bad food that's like literally rotten or spoiled, it's going to harm you. That's the difference between fermentation and sadana. This is sadana. ठीक है, ethanol you get by literally I feel like I've said the word sadana too many times, but sadane se बनता है. The thing is कि if you keep going, letting this go for a long time, glucose बन जाता है ethanol, carbon dioxide in the presence of yeast, basically. That's what is used over here. Glucose gives you, यहाँ पे लिखा already, yeah, this and this. All right, sweet. So another thing that's used is to speed up yeast. It has enzymes that convert a simple sugar, C6H12O6. Simple sugar, हाँ, C12H22O11 is your खाने वाला sugar. This is a simpler sugar, digestion-wise. Agar if you're a bio student, you probably appreciate that. Is either glucose or fructose, both of which have a formula of this. Why are there two names but the same formula? Please, you know this. Organic chemistry hai, isomers, man. Figure it out. We'll do this in biomolecules. Okay, so you start with regular sugar. You use something called invertase, and you get glucose and fructose. There's an enzyme, and specifically with zymase, you get these. You need to mug these guys. Invertase, zymase. मुझे याद है from my school time. Again, for those, if you're aiming a high score, please go through these. What's up, Dhruv? क्या चल रहा है? Good to see you here. So, yeah, that was it about ethanol. Do I have anything more? Yeah, just like in methanol, ethanol may be, ethanol का industrial preparation is this process, right? वो हमने कहानी सुनाई lab में बनाने के लिए. Industrial preparation is you use ethene, water, acid. Wait, what? Yeah, this is a way to prepare alcohol. We studied this, and a lot of the word alcohol is produced this way. We usually add some additives so people don't drink it because, well, yeah, that's addiction, right? So we add CuSO4 and that's crazy. It's foul smelling and bad for you. So yeah, to make sure that people don't drink it. But people still find ingenious way of doing things that they want to. Anyway, सवाल करते हैं एक दो, बहुत theory हो गई. Reaction of phenol with chloroform in the presence of dilute NaOH. किस ग्रुप को ऐड करता है? ओके, फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है. व्हाट इज क्लोरोफॉर्म? बताओ. CHCl3 and dilute NaOH. Oh, we've done this. We've just done this. What does it form? To people who have joined in a little bit late, that's all right. Can you tell me what do you think this is? किस चीज को ऐड करता है? प्लीज थोड़ा सोच के बताइए. D. All right. Dhruv says D. Yeah, simple one. Aldehyde gets added. Is it? Okay. Why aldehyde? Why not acid? Aldehyde acid में कैसे याद करें कौन सा क्या होता है? देखो, अगर CO2 है, that leads to acid. CO2 acid में क्या होता है? CO और OH ग्रुप है. यहाँ पे C
और H है, दिस इज फॉर्म्स फ्रॉम CCl2, क्योंकि CCl2 से बन जाता है COH, OH, H, water leaves. This, अरे तो पूरा ऐड कर दिया. This is the short way of remembering it. Yeah? If you're making short notes and all that, what does what? CO2 से बनता है acid, and from carbene you get CHO. So all of these things, these are middle parts, right? ये चीजें बीच की चीजें हैं जो हमको पहले important नहीं है. The final thing is CHO being added. All right, sweet, good job on that. Do I have more questions? Yeah, I have a couple of more questions. एक और सवाल है. इस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज किया जाता है? सेम ही रिएक्शन की बात हो रही है. ज्वेल, थैंक्स. इस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज किया जाता है? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम नीट और जेईई. या सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? इसमें क्या होगा? इसमें भी डी. ओह नो, अच्छा प्रीवियस वाला आप लोग बोल रहे हैं. ठीक है, टेक योर टाइम. बताइए बताइए बताइए. And what do you think about this? Yes, CCl2 is the electrophile. But hold on. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. रश्मि जी बी बोल रहे हैं. That's interesting. HCO plus. That's very interesting. HCO plus इसमें होता है क्या? Maybe. Okay. Well, see, देखो. क्या करें? CCl3 minus is formed. I agree, but that's not what reacts with the ring. Okay. CCl3 minus, say, as I literally just told you guys some time back, these guys go there. And since electrons go away from the carbon, you get CCl2, this. And this is what gets attached by the phenoxide ion. ठीक है? Which means कि आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन C. HCO plus is not in this reaction. Rashmi, thanks for giving me your answer. But ये कहीं और यूज होता है. When we do aldehydes, ketones, and carboxylic acid, we'll probably come across this. But it's interesting कि you already have an idea about HCO plus. Yeah. That happens, to give you a hint, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो, कोई रिएक्शन है जिसमें हम लोग इससे रिएक्ट करते हैं. Okay, and this is crazy, right? Carbon monoxide, you would think कि this is plus, this is minus, but that's not the case. Formal charge, मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है कहीं मैंने पढ़ाया, बहुत लोग पढ़ाते हैं, formal charge NCERT भी पढ़ाता है. This has a negative formal charge. Okay, which is crazy, which is why it becomes interesting. And इसीलिए जो H gets attached over here, जो HCO plus उन्होंने बोला and all of that. Anyway, more on that when we do something else. अभी नहीं बस की बात करेंगे. थोड़ा that's going to distract you guys a little bit. All right, sweet. एक दो सवाल और कर लेते हैं. जब फिनॉल को ट्रीट करते हैं, अरे कितने बार पूछेंगे यही सेम चीज. स्किप दिस क्वेश्चन. इसका आंसर क्या है? एल्डिहाइड बनता है ना. एल्डिहाइड आंसर है. छोड़ो. ठीक है, कूल. I feel the questions are being a little repetitive. So let's go on to some more theory. थोड़ा और theory कर लेते हैं. Okay, so we've done two things. Last चीज बाकी है, कुछ 15 मिनट बाकी है टाइम. ऑल्सो आई थिंक विल फिनिश इन 5-7 minutes itself. रिएक्शन ऑफ ईथर, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं. ठीक है, ईथर में क्या है? दो चीज हो सकती है, या तो CO बॉन्ड टूटेगा, या तो फिर इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, well not necessarily इसके इलेक्ट्रॉन, बट ठीक है, some electrophilic substitution reaction happen. But I'll spoiler alert, this is just aryl ethers. ठीक है, let me change the color. This green is मेरे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है. let me use my good old yellow. ये सिर्फ aryl ethers के लिए है. Aryl मतलब aromatic ethers के लिए. All right, sweet. Let's talk about the cleavage of CO bond. CO bond क्यों टूटेगा? Well, somehow if this guy decides to take the electrons and go away, which means कि यहाँ पे positive charge बन जाएगा. Positive charge क्यों बनेगा? अगर positive charge क्यों बनेगा? Acid react. If I put an acid or do I put a base? What do I put here to make this happen? थोड़ा सोचो. Acid डालो या base डालो to make this happen? What do you think? So they are unreacted towards bases, okay? But acid के साथ करते हैं. क्यों? क्योंकि acid plus के पास है H plus, and जैसे ही oxygen देखता है H plus को, it's like gimme. And the moment it does that, and this bond becomes weaker, the CO bond, and takes electrons, goes away, etc. ठीक है? So ये protonated ether substitution कर सकता है alcohol को निकाल के. ठीक है, let's see.
तो let's make this react with HX. HX is the acid, right? Don't look at it as something new. It's just an acid. HX मतलब HCl, HBr, HI, they are all acids, right? HF नहीं, not really. HF साथ कुछ नहीं होता. You already know HF साथ कुछ नहीं होता है. Not in organic chemistry. It's a great solvent, but reactions नहीं होते. I know you've seen Breaking Bad. If you're going to argue with me saying, no, HF is good, not for reactions. Okay, cool. HBr, HI, क्योंकि they are acidic enough to protonate the ether. ठीक है. Bromide and iodide are also great nucleophiles for this reaction. ठीक है. मतलब कि एंड में क्या बनेगा? मुझे मिल जाएगा एक अल्कोहल और एक हेलोअल्केन. Let's see. That's interesting. So I've got an ether, ROR dash. ठीक है. And you know the plus charge isn't needed. हमेशा कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज बनना जरूरी नहीं है. But say I've got this. ये this fine, right? Acid डाला तो इसके this acid gets added over here. It's got electron. The taxes gets ये बन जाता है. ठीक है. थोड़ा हीट करो निकल जाएगा. अब this could undergo SN1 या SN2 दोनों रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां से आया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक मतलब समथिंग दैट लाइक न्यूक्लियस मतलब नेगेटिव चार्ज. हाँ श्योर. आयोडीन आ रहा है. आयोडीन तभी आएगा अगर इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा. तो ठीक है न्यूक्लियोफाइल ये है आयोडीन. ठीक है ग्रेट. SN1 SS2 SN2 SN1 तब होगा अगर टर्शरी है. एंड SN2 also can be this thing, but ठीक है. Let's say that टर्शरी है तो पक्का SN1 हो रहा है मतलब कार्बोकैटायन बनेगा. अदरवाइज इट इज SN2. ओके फॉर ईथर्स. SN2 रिएक्शन कैसे होता है? मतलब वन स्टेप रिएक्शन हो रहा है, राइट? देयर इज नो क्या बोलते हैं कैटायन कार्बोकैटायन गोट बी फॉर्म. देयर इज नो रीअरेंजमेंट. कुछ नहीं हो रहा है. नन ऑफ दैट. देखो वेल व्हाइल इट मे नॉट बी नेसेसरी फॉर JEE मे नॉट नीड रीअरेंजमेंट. अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो पॉसिबल है ना. जस्ट कीप इट इन माइंड. वी आर नॉट गोइंग टू dwell that so much with questions. ठीक है. we'll do simple things अभी के लिए इस चैप्टर में. HBr डाला मैंने सिमेट्रिकल लिया है यहाँ पे. ठीक है. एक तरफ H ऐड हो गया एक तरफ ब्रोमीन ऐड हो गया. खत्म. That's it. You're done. Right? Any doubts on this so far? Right? Is this complicated at all? We'll look at the reaction mechanism. Already आपको बता चुका हूँ. पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ ईथर. सेकंड अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल. इसीलिए सबसे जरूरी when you start doing 12th grade chemistry is to know SN1 SN2 E1 E2 properly. इसलिए मैंने हेलोअल्केन में आपके साथ किया था डिटेल में. अगर उसमें डाउट है तो प्लीज गो चेक दो सेशंस आउट. हेलोअल्केन. दिस इज सिंपल. ऑलरेडी शोन यू दिस स्टेप. बन गया ये प्रोटोनेटेड ईथर. अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल कहां पे करेगा? न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग मतलब इसी पे करेगा ना. बट कहां पे? इस पे करेगा क्या? वील सी. नॉट रियली, राइट? दिस वन ऑफ दीस बॉन्ड्स ब्रेक्स. One of these bonds breaks because oxygen positive charge is not stable at all. Negative charge awesome. Oxygen positive no, not really, right? So one of these breaks. Which one? Depends. ये तो symmetric है तो doesn't matter. Yeah, doesn't matter here कौन सा टूटता है. जो भी तोड़ो same ही product बन रहा है. ठीक है. So this will attack this carbon. Okay. Okay. Cool. All right. Sweet. I'm guessing the no is for the doubts वाला business. So you get an alcohol. And you get a haloalkane. That's it. You're done. Interestingly, अगर मैं ज्यादा HBr डालूं तो क्या होगा? फिर से ये रिएक्शन हो जाएगा. तो जो अल्कोहल बना है वो भी बेचारा फिर से तुमको हेलोअल्केन दे देगा. Oops. So HI अगर एक्सेस HBr HI जो भी एक्सेस में डालूंगा तो जो एथेनॉल बना है तो वो फिर से रिएक्ट करेगा और मुझे और दे देगा ब्रोमाइड. ठीक है. सेकेंड मोलर इक्विवेलेंट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड. यही अंग्रेजी में लिखा है यहाँ पे. एक्सेस HI के साथ बनेगा. क्या बनेगा आप बता दो. कैन यू टेल मी? लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सॉल्व करते हैं. क्या क्या बनेगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? बताइए. I've got an ether, asymmetric ether. In this case, it doesn't matter because I've got दोनों तरफ से. If I put excess HI, you have the whole process. At the end, you get this and you get this. Okay, cool. But I've got excess, lot of HI. Like yay! तो ये भाई साहब जाएंगे OH2 plus, right? Because it gets attacked by this, and all of that leaves, and then we're all happy because this guy attacks this guy. So you have this, and you have this. 3 carbon थे 1, 2, 3, and you got a mixed product of this sort. So be careful if you're going to use excess HI. This is what's going to happen. Okay,
SN1 रिएक्शन क्या होगा? सेम चीज, कार्बोकेटायन बन जाएगी. या if I have a tertiary carbon right here, first step is formation. Okay, this is the final answer. First step is protonation, gives you that awesome this thing. This bond breaks right away and gives you ethanol, in this case methanol directly, and यहाँ पे हमारा बन जाता है Br. So if you've got a tertiary ether, if you are tertiary group on one of the ether sides, one of the R or R dash is tertiary, then that will form the haloalkane first. That is what we are taking away from this. अगर एक्सेस में है तो दोनों बन जाएंगे, बट पहला बनाएगा ये वाला अगर टर्शरी है तो. आयोडोप्रोपेन, ऑलराइट. आयोडोप्रोपेन नहीं यार ध्रुव, let me go back to that because there's a bit of a this thing. आयोडोप्रोपेन नहीं बन रहा है ना. This is आयोडोमीथेन. कौन सा वाला? नीचे वाला आयोडोमीथेन है. This is आयोडो, so what's before ethane? Yeah, है ना. So why is it gonna, I didn't understand why we said propane. Maybe a line diagram समझ में नहीं आया कि तीन है चार नहीं है, but there are two carbons here that will basically do this and this one will do that. Yeah, please थोड़ा सा इसको revise कर लो. Making line diagrams usually makes life easier, so please get used to it. All right, so protonation and all of that, this gets formed, and the one that forms the carbocation, वही तो, that is what gets attacked ना. देखो, this is just a nucleophilic substitution reaction. तो जो कार्बोकेटायन बन रहा है वहीं पे तो आयोडीन अटैक करेगा, है ना. कोई नई चीज नहीं है. डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय द नंबर ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग पैरेलली. आई नो यू नीड टू डू SN1, SN2, E1, E2 प्रॉपर्ली. अगर नहीं किया है, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं, गो चेक माय सेशन आउट ऑन दैट. दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, व्हाट इफ यू हैव एन अल्काइल अराइल ईथर? दिस इज ऑसम. दिस इज स्लोली गोइंग इनटू द होल अराइल ईथर वाला टेरिटरी. आपको ऑलरेडी मालूम है कि जो अराइल और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, दैट्स नॉट अ सिंपल सिंगल बॉन्ड. सो वो टूटने के चांसेस नहीं है. तो जो बॉन्ड टूटेगा, दूसरी तरफ वाला कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटने वाला है. मतलब क्या हुआ इसका? अंग्रेजी में यही लिखा है, alkyl aryl ethers are cleaved at the alkyl oxygen bond and not at the aryl oxygen bond due to the more stable aryl oxygen bond. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? If I take this example, that means that this bond is going to break. How will it break? Well, let us see. पहले तो प्रोटोनेट हो गया. प्रोटोनेट होने के बाद these electrons will go on to this. That is what we are saying. ठीक है, and this bromide guy is then going to attack this. That's all. So what do you get? You get CH3Br in this case and phenol. So in a way, you can look at this as a way to prepare phenol from an ether, from an aryl ether. The easiest thing is to make it react with acid. Cool, right? No, don't worry about it. होता है वो सब, doesn't matter. This is fine. This is awesome, right? So try and look at these reactions from as many points of view as you like, because मैंने एसिड डाला और बन रहा है फिनॉल ईथर फॉर एन अराइल ईथर. दैट्स व्हाट्स आल्सो हैपनिंग. आई नो यू आर आल्सो सेइंग कि ये हेलो एल्केन बन रहा है, बट यू गेट बैक फिनॉल. प्रीटी कूल, राइट? सो अगर मैं एक्सेस डालूं तब भी नहीं बदलने वाला है. ठीक है, दिस इज जस्ट अ वे टू डिस्ट्रैक्ट यू बाय सेइंग यू एक्सेस डाल दिया. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. इट्स गोइंग टू स्टिल गिव मी दिस एंड इट्स गोइंग टू गिव मी दिस, बिकॉज ये बॉन्ड नहीं टूटने वाला है. ठीक है, कूल. यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक. You remember SNAR reaction? Yeah, वो अलग है. वो फिनॉल में देख लेना, लास्ट क्लास में जो किया था, उससे पहले किया था, शायद हेलो एल्केन में किया था SNAR रिएक्शन. या SNAR भी हेलो में किया था ना, फिनॉल से बनाना हेलो एल्केन. दैट वाज प्रीटी टायरिंग. बहुत पापड़ बेलने पड़े तो वो करने के लिए. ऑलराइट, लेट्स क्विकली देन लुक एट द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन, व्हिच इज electrophilic substitution reaction. And you'll be like, really, do we even have to study it? It looks like it's very daunting, कोई बड़ी चीज है, but literally कुछ नहीं है, right? Normal, अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है यहाँ पे. ठीक है, what if I have ethers? ईथर में देखो, the OR group is orthopara directing, like anisole, like OCH3. It is orthopara directing, which means it activates the ring. We can look at a fancy animation that shows you all of this. That red set of electrons is not in plane with the benzene electrons. The yellow ones are. ठीक है? And again, this is since plus charge oxygen पे, मतलब this is protonated. Hold on, the red one is not pair of electrons. Red one is the H hydrogen atom. My bad on that one. Right? Protonated है तो ये हो रहा है. Yeah, that's it. That's it. That's what that's happening.
So ortho para directing है, which means कि these are the different what you call it, resonance hybrids. Yeah, ortho para have negative charges वहां पे ज्यादा है, तो मतलब पॉजिटिव जहां अटैक करेगा. व्हाट इज पॉजिटिव? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. हाँ, हाइड्रोजन हटता है ना, तो सब्स्टिट्यूशन, नॉट एडिशन. नॉट एडिशन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन बॉस. जो हाइड्रोजन था ना वो हट जाता है, तभी तो आता है कोई चीज. ठीक है, डोंट मग, नीड टू नो व्हाट वी आर डूइंग. ओके, सो हैलोजिनेशन डालो, मेजर एंड माइनर. Hey, by the way, I think I skipped over one small part. I'll get back to it. I just realized this major minor. I didn't specifically tell you कि ये वाला major क्यों बनता है उस केस में. When we did salicylaldehyde, we'll get back to that. Just remind me to do that. So bromine डाला, major minor as expected. I can also do alkylation, Fieldcraft, etc. CS2 disulfide में करो, CaCl, it gets added, major minor products, etc. Nothing new here at all. I can also do, what can I do? I can do, this is alkylation, I can do acylation. है ना? That's it. Done. Let's do one last question, which is the easiest thing on this planet. What is this? ये क्या है? This is a nitrating mixture. Right? Nitrating mixture है, भी वही होगा, OCH3. Let's say कि we'll just do para as the major product and you'll figure out the rest. Right? Simple. All right. The part that I told you that I'll tell you at the end of this session that I kind of forgot while I was telling you was, एक second, back to our good friend Riemann-Tiemann reaction. कि why is it that the ortho product is more stable? नहीं, ये तो acid है ना, sorry. This is not Riemann-Tiemann, this is whole base electrolysis. This guy here. Why is this more stable? Because your initial step था यहाँ पे. Let me just quickly draw that. You had ONA. And remember, hold on, I'm going to quickly go back to this. Take a second. All right, ditch it. I think that's a bit too much, but sure. Basically, the Na plus attracts the Cl minus. Similarly, when we do CO2, the oxygen part is attracted by sodium. इसलिए ortho वाला major है. ठीक है. I feel like if I write it down, you see the notes later on, you'll be like, what is this now? So I'm just saying it verbally. बार-बार बोल रहा हूँ. Oxygen O minus के साथ Na plus लगा हुआ है. That will attract the nearby Cl, and hence prefers doing that. Similarly, previous वाले में CO2 में it attracts the oxygen, so hence ortho is more stable. I'll leave it at that. I thought कि I'll sit and do the reaction mechanism, but I don't think that's worth it. एक quick question कर लेंगे just to end this chapter. एक last सवाल, आखिरी सवाल. The ether that undergoes electrophilic substitution reaction is which of these? Just making sure that if you guys are awake, whoever's watching this, because this is an easy question. इसमें से कौन सा ether undergoes electrophilic substitution reaction? I think all you have got to do is identify कि कहाँ पे है aromatic group, because electrophilic substitution reactions are only going to be possible on an aromatic ether. Which means the answer is B. Ta-da! All right, that's it from me. Thanks for sticking around. This was a fun session to do. What do you guys want me to do next? Do you want me to do some, wrap up with organic? Maybe do क्या बोलते हैं इसको, aldehydes, ketones, or do you want me to do inorganic? Because inorganic मैंने नहीं किया है 12th grade का. I've started with organic. And or do you want me to do some practice sessions? बताइएगा. Let me know in the comments. Ping me on IT, Scam on Discord, Telegram, wherever you guys like. As always, if you like this, share it with your friends. All right. Thanks, everybody. Bye. Oh, and 8:30, as always, I'm going to be meeting you for Thamo. See you. Bye.